Welcome all of you in the Yoga Research Study Circle under the umbrella of WHRF Health Research Foundation. Yoga Research Study Circle is made to encourage research work in the field of yoga and health. All are welcome to enroll for research work and avail the opportunity to get their work published and recognized. WHRF also conduct training courses and workshops at our studios, Sector 52, Noida, and various other centers in NCR regions, details of which are available at the Facebook and YouTube page of WHRF and Yogaguru. So for today, our guest is an expert in lifestyle management. So welcome to Sarita Chauhan. She is the lifestyle coach, author, and mentor. She is a founder of Evoke Inspiring Lives, an initiative working for facilitating women and inspiring to become entrepreneur and role model. She has an author of 2 bestsellers book. So Sarita has been awarded Women Entrepreneur Maker of the Year in the March 2021 and Best Business Coach in May 2021. She has been speaker on many events in the country and abroad. Today, Sarita ji will guide us how we can use our emotional health to increase our power and strength in various spheres of life. So welcome, Sarita ji. Over to you. Thank you so much, Reena ji. Very warm, good evening to all of you who are watching it right now and who would watch it later also. So my name is Sarita Chauhan, and I think I do not qualify to be called as a lifestyle management or expert, honestly, because I think there's miles to go before, I can actually say that I'm an expert. Life is something, I think, we are just evolving, we are learning. I'm also learning, and you can say I am a lifelong learner. And because of certain experiences in my life, I have started emotional intelligence workshops, and also I work with people on the subconscious mind level. I would definitely like to share my story, how I reached till here. Born and brought up in Delhi in a middle class family. My father is an army officer, so I was raised with a lot of discipline and strictness. I lost my sister when I was very young, and I think that is one episode in my life that I, as a very young kid, as a 9-year-old kid, I think I was looking for some answers from life, like why us, why so early. I have seen my parents struggle because it was the first one is always very special for parents, and she was 18 when we lost her. So huge, good number of years that she spent with them. And I realized that they became very emotionally vulnerable after that, and they could not express themselves, because of which I would say that I led a very good life. My father is very spiritual, yet I could see some missing things in my life. Like, I never saw him really laughing after till date. I think he recuperated in his own way. So I was looking for certain answers even when I was a kid, and I felt that my purpose in life when I was a child was to make people happy. And maybe it came from there, or it came from movies. I don't know, but that was when anybody asked me, who do you want to become? I had this vague thing. Sometimes I told people, sometimes I did not. But the fact was that I always felt that my purpose is to make people happy. But as life evolved, I chose economics in my studies. Though I had this, after I lost my sister, I really wanted to study psychology when I grew up. But at that time, psychology was not a very happening, or I'll say, preferred subject. There were doctors, engineers, and MBAs later. So I also chose economics. I did bachelor's in business economics from DU, and then went on to do my master's in business economics from APJ Institute of Management and IT. And I started my career in research. Whenever so there was this kind of, I'll say that, a gap that was created at that point of time. I wanted to choose something else, but I chose something else. So because of that, probably there was a dissatisfaction always, very, very little dissatisfaction, because I feel I was someone who always believed in giving best. So I worked at places, found some gaps, left. So I was a job hopper. In 6 years span, I changed 8 jobs.
And every time I would make up to a better position, better package. So I was enjoying, but I was at the same time every evening asking myself, do I really want to go to office next day? Though I would find a reason to go, but still I felt a gap. And I think just like me, a lot of people feel that gap. We are working either for money or for recognition. So I think recognition was also one of my need. The affiliation that you get from people, and then obviously a career gives you good and decent money. So all of this combined together made me still stick to a job, unless and until I went in. When I got married, I had child within, I think, 1.5 years of my marriage. And I was becoming a mother. So while I was becoming a mother, I realized that I was traveling so much for this particular job, which I really enjoyed. To be honest, that was one place which had a very good corporate culture. I was in corporate strategy, a dream of every economist. Yeah, and even though I was enjoying my job there, the travel made me, really sick. I started getting low BP, and there were emotional challenges as well. For being a young mother, I went into postpartum depression. But and we don't question all this. I was like, okay, everything is fine. After I recuperated, I went through a treatment, and I could not feed my daughter. Let me tell you, after 17 days, I could not feed my daughter because I was on medication due to postpartum depression. And then again, 3 months, I joined back my office. I was with Vicky at that point of time. Everything went fine. And until one day, I again felt, that I'm not enjoying my job. So the answer was changing the job. This particular place I liked. As I said, I was in corporate strategy. I really liked working at this infrastructure financing company. So I had already worked with almost 7 sectors in, who's who, the companies that people really want to work with. I would say, lucky and hardworking enough that I worked with those companies, but there was a dissatisfaction. And later, I think in 2014, I started my own, you know organization. Initially, I tied up with a few people, didn't work out for a year, went into trainings, learned a lot from my last job, which was teaching entrepreneurs. So business acumen and business management is something that I really enjoyed, and that's what I chose to train people on, in for 2 years. And I did wonderful programs, started a consulting company, and parallelly I also launched Evoke Inspiring Lives, an organization that mentors women. It mentors women for emotional intelligence, for their mental health, mental challenges. And also, if you want to start a business, then also I work with women. And it's basically a not-for-profit, rather social, enterprise. So the fee is also as per what women, can really afford. So it's not a business, for profit business. It is a social enterprise. And then I also have a consulting company through which I consult MSMEs. So I do a lot of things in an era of specialization. I do a lot of things because that's what makes me happy. And last 3 years, so in 2015, I lost my sister-in-law, and I went back to my childhood time where I had a lot of questions. And again, those questions because she left a very young kid in my family. So I was a mother of one daughter, and then came also, the son, who she left, and he was 1 year. And again, I think I went into that zone where I asked a lot of questions, and I was looking for answer through spirituality. I did a lot of programs to heal, to recuperate. I did Reiki, to help my kids, because at the same time, the kids, I think they became my priority. So I learned Reiki so that I can help people around. Elders also were very vulnerable, and the similar feelings that I experienced in my childhood came back to me, which led to learning psychology at this stage, which led to learning emotional intelligence, even though I was a business coach. And a lot of people know me as a business consultant and a coach, and I successfully did it for almost 6 years, 7 years of my life. But with 2015, I started learning all this. So for almost 4 years, I did, certificate in psychology, children, adult, learned NLP, and a lot of practices for self-healing. And I also started practicing them on my clients who were connected to me for business. And later, I actually started programs on subconscious mind, on emotional intelligence. And I do a lot of videos also on all these
subject matters. And I am really, I'll say I am very grateful for universe to giving me so many opportunities through all what I have learned in my life. So today I have some programs that I do on emotional intelligence. I can't say I'm a lifestyle management expert or emotional intelligence, coach, but yes, I have learned a lot, and I am trying to help women and people in general through what I've learned. So that's my story. Now let me tell you something about emotional intelligence that I think everyone should know and must know. So there are basically 5 dimensions of emotional intelligence that are very easy for everybody to understand. And as women, I think it is all the more important for us to understand, because we have family, we have so much to handle right now, we have kids. So if you understand all this, it is easier for you to sail through life. If you're emotionally healthy, mentally healthy, then I feel that you can conquer the world. Otherwise, no matter how much you can dream, how much you can, you can set your goals, you can have the best of career, but you would have something, that would always be amiss. Something that you would, some days you may feel and on top of the world, and some days you may not. And this is what comes from experience also of working with people. I've seen women really, really struggling in their life when it comes to emotional health. There may be, those who are lucky and they have support, but I know that because life is so demanding these days, things are so, I would say there's so much of competition, you forget that as a person you hold so many emotions which need healing and which need to be sorted before you really want to conquer the world, before you really want to, achieve your goals. So what are those pillars? So number 1 comes self-awareness. So by self-awareness, I mean that what you're feeling right now, what you're feeling when something happens in your life. How aware are you? कितना पता है आपको आपके इमोशंस के बारे में? Let's say आप एक ग्रुप में हैं and किसी ने आपको कुछ कहा जो आपको थोड़ा सा खराब लगा, उसके बाद आपके अंदर कुछ इमोशंस सडनली आते हैं. कुछ मिनट के लिए आ सकते हैं, ज्यादा टाइम के लिए आ सकते हैं. आप हो सकता है उनमें से हो जो सामने एक्सप्रेस ना करें, बट बाद में उसके बारे में सोचें. लेकिन आप उतने अवेयर होना कि मुझे क्या फील हो रहा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है. एंड इमोशंस, देयर सो मेनी इमोशंस, हम तो थोड़े में ही स्टक हो जाते हैं. लव, हेट, एंगर, वरी, 10-12 इमोशंस जो एकदम से आपके दिमाग में आएंगे. लेकिन आपको पता है 50 से भी ज्यादा इमोशंस जो हम फील करते हैं. एंग्जाइटी इज एन इमोशन, confusion is an emotion. They can be, and the point is that all these emotions, ये यार आपकी जो स्टेट है, इनर स्टेट को डिफाइन करते हैं. आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट में कैसा फील कर रहे हैं, वो आपके अंदर जो इमोशन है उस टाइम पे वो डिफाइन कर रहा है. So, इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है. क्या इमोशंस मैं हर रोज फील करती हूँ, क्यों फील करती हूँ, इज देयर अ पास्ट बैगेज, इज देयर समथिंग इन माय सबकॉन्शियस माइंड कि मैं, एंड आपको पता कैसे चलता है? बिकॉज आपका जो बिहेवियर है वो उससे पता लगता है कि आपके अंदर इमोशन क्या है. अगर आप बहुत वरी सम दिखाई दे रहे हैं, बहुत एंग्शियस दिखाई दे रहे हैं, कभी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर जो इमोशन है दैट इज समवेयर रिलेटेड टू सम वरी, सम एंग्जाइटी, सम स्ट्रेस. कुछ ऐसी चीज है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है, तो उस इमोशन को टटोलना और समझना बहुत जरूरी है. सो पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस. जब आपको ये पता होगा कि मेरे को कौन से इमोशंस हैं जो मैं फील करना चाहती हूँ, क्या मैं उन्हें फील कर रही हूँ. एवरीबडी वांट्स टू फील लव, टू फील हैप्पी. क्या मैं हैप्पी फील कर रही हूँ, क्या मैं लव्ड फील कर रही हूँ, क्या मैं काम फील कर रही हूँ, कंपोज्ड फील कर रही हूँ. और अगर नहीं कर रही हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ. व्हाट आर द फैक्टर्स इन माय लाइफ जिनकी वजह से मैं फील नहीं कर रही हूँ. जितना अवेयर आप अपने इमोशंस के बारे में होंगे उतना आप उन पे काम कर सकते हैं. नाउ सेकंड पिलर इज सेल्फ मैनेजमेंट. सो जब आपको ये पता चल जाए कि आपके इमोशनल लेवल्स क्या हैं, आपके कौन से इमोशंस हैं जो आपकी लाइफ को रूल कर रहे हैं, या एट पर्टिकुलर मोमेंट में क्या फील कर रही हूँ, तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट इज आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स बोथ. सो अगर मेरे को पता है कि मैं लोगों के साथ में बैठी हूँ और मुझे किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए कि घर में कुछ हुआ है और मैं
तो दैट विल कम इन माई बिहेवियर ऑल्सो ऑटोमेटिकली. आपने देखा होगा कई बार हम हमेशा कहते हैं, कभी कोई बॉस अगर आके चिल्ला दे ऑफिस में तो हम कहते हैं कि घर में झगड़ा हुआ होगा. सो दैट इज वेयर द सेल्फ मैनेजमेंट कम्स इन प्ले. नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, नो मैटर व्हाट, सो आपका बिहेवियर क्या है. Are you able to express to people कि यार I'm not feeling good right now, let's talk later. That is also a way of self management. तो आप अपने आप को मैनेज कैसे करें. मान लीजिए कि मुझे वल्नरेबल फील हो रहा है राइट नाउ, मे बी किसी भी रीजन से हो सकता है. मे बी माई किड इज नॉट डूइंग गुड इन एग्जाम, अच्छे मार्क्स नहीं आए मान लीजिए मेरे चाइल्ड के, तो मेरे को अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है. आई एम फीलिंग आई एम नॉट अ गुड मदर, बैड मदर, एंड इन दैट मूड आई एम ऑल्सो देन मैं द 100 थिंग्स आई मीन टेल माई सेल्फ, मेरी सेल्फ टॉक बिगड़ जाती है. आई एम अ टेरेबल मदर, आई हैव गिल्ट. तो एक इमोशन ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, फिर फ्रस्ट्रेशन, देन एंगर, एंड देन आप उस लूप में फंस जाते हो फॉर फ्यू डेज. बट अगर आप अवेयर हैं एंड आपने लर्न कर लिया कि मैनेज कैसे करना है, तो आई मे फील इट, I will take a stock. I'll accept, okay, ठीक है, I'm feeling vulnerable right now. I need some time to relax. So I'll find something. जितना मैं उस मैनेजमेंट को, उस अवेयरनेस को समझूंगी, उतना ही मैं बेटर फिर लोगों से भी बिहेव करूंगी. सो दैट इज मैनेजमेंट. मुझे आपने मतलब, एंड दिस इज ऑल्सो आई थिंक इट्स अ वेरी जनरल थिंग दैट हैपेंस विद पीपल कि जब भी आपके इमोशंस अंदर से ठीक नहीं होते, फीलिंग्स ठीक नहीं होती, ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज करेंगे कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बिगड़ जाती है. आपका बिहेवियर बिगड़ जाता है. आप अपने बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं, आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं अपनी लाइफ के लिए. ओके, सो दिस ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी. तो मैनेजमेंट वहां पे काम आता है. यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज योर इमोशन. एंड देन थर्ड पिलर इज सोशल अवेयरनेस. आपको अपने अलावा दूसरों के इमोशंस का भी ध्यान रखना. आपके आसपास जो लोग हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस दे आर फीलिंग. Okay, what is their level of maturity, understanding, how can you help them release negative emotion, how can you help them become better, even your children, your spouse, so many people. So that comes in social awareness. Maybe you have somebody who is not very good in expressing emotions, या रूड लोग भी होते हैं हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा एंग्री लोग भी होते हैं. तो जो हम सोशल अवेयरनेस को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, देन वी नो दैट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ पीपल हु मे डिस्टर्ब अस, हु मे नॉट बी वेरी हेल्दी फॉर आवर बैलेंस. हाउ टू अवॉइड देम, दैट इज सोशल मैनेजमेंट. सो अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे इमोशंस हमारे आसपास हैं, या हमें कैसे लोगों को हेल्प करना है उनके इमोशनल इंटेलिजेंस में, या यू कैन से बैलेंस में, आई रादर से बैलेंस. एंड उसको आपको कैसे मैनेज करना है, दैट इज द फोर्थ पिलर विच इज सोशल मैनेजमेंट. जब आपको पता है कि मे बी यू हैव समबडी हु इज वेरी सेंसिटिव, तो उनसे क्या बात करनी है कि वो उतना सेंसिटिव फील ना करें, उनको कैसे हेल्प करना है कि वो इतने सेंसिटिव अगर उनके लिए अच्छा नहीं है, मे बी इट्स योर फ्रेंड और इट्स योर नेबर, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं आप, दैट इज सोशल मैनेजमेंट. कैसे आप एक पार्टी में बेसिकली बिहेव करते हैं, दैट इज ऑल्सो सोशल मैनेजमेंट. मे बी यू आर नॉट फीलिंग गुड, मे बी यू आर इन अ बैड मूड एंड यू हैव टू रियली गो टू दिस पार्टी, आपको जरूर जाना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप उस स्टेट से बाहर कैसे आएंगे सो दैट सामने जो लोग हैं दे फील दैट यू आर कंफर्टेबल. उन्होंने तो कुछ नहीं किया, why should they suffer because you are not feeling all right. So आप वहां जाके कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपने अंदर की चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं. मे बी आई एम फीलिंग एंग्री राइट नाउ, मे बी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बट देन आई सी माई चाइल्ड कमिंग. इफ आई कैन लर्न टू नॉट एक्सप्रेस माई एंगर टू फॉर द चाइल्ड सेक, मे बी वो आप अपने स्पाउस से आर्ग्यूमेंट बंद कर दें, या आप उनको देखकर एकदम से स्माइल कैसे करें, दैट इज वेरी पावरफुल. एंड आई फील दैट विमेन शुड लर्न टू प्रैक्टिस ऑल दिस. So ये 4 पिलर बेसिकली जो है डेनियल गोलमैन ने जो सारे वर्ल्ड को दिए हैं. आई फील देयर इज अ फिफ्थ पिलर विच इज एडवर्सिटी मैनेजमेंट. सो वी सी, हमने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा, देन वी आल्सो सी अ फ्यू कपल ऑफ केसेस. डिप्रेशन, एंजाइटी कैन आल्सो बी फेटल, बट challenges आर विद एवरीबडी. हर किसी की लाइफ में चैलेंज है, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा. अगर आप एडवर्सिटी में कैसे अपने इमोशंस को होल्ड करना है, कैसे उनको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है या रिलीज करना है, उसे सीख लें. दैट इज कॉल्ड एज एडवर्सिटी क्वेश्चन. सो लाइफ कैन बी टेरेबल, टफ. हमने कोविड का सिचुएशन देखा है. ओके, सो आई फील द फ्यूचर इज फॉर पीपल हु आर रियली इमोशनल एजाइल
and intelligent. Because जब तक इतने कंपटीशन और इतनी सारी चीजों के बीच में अपने आप को प्रूफ करने की भाग दौड़ में अगर एक टूल जो कि आप लर्न कर सकते हैं विच विल ऑलवेज ऑलवेज हेल्प यू, मतलब वो कहते हैं ना कि वो 12 मासी पेड़ होते हैं, जैसे ऐसे ये 12 मासी और 4 मौसम वाला एक टूल है जो आपको जरूर लर्न करना चाहिए, आपको जरूर समझना चाहिए, विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस. एंड बीइंग विमेन आई थिंक we must because we have sometimes I feel एज मदर आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, कितने बैलेंस्ड हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, योर ऑफस्प्रिंग वुड ऑटोमेटिकली बी. एंड आई नो कि आपके स्पाउस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मे बी यू आर इमोशनली बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ समबडी एल्स आपका वो बैलेंस डगमगाता है. बट येट इफ एज अ मदर यू कैन लर्न दिस टूल, आई फील देन नोबडी कैन, कोई आपके कितना भी क्लोज हो वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा. एंड आई पर्सनली सीन it in my life and with my clients also. So this is, I think these are things that really everybody requires, women all the more, and you can learn it. As I said, 5 pillars हैं, आप इन चीजों को डिस्कवर करें अपने लिए. बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप करें. कुछ चीजें आई फील कि फॉर बीइंग इमोशनली बैलेंस जो आपको जरूर करनी चाहिए हर रोज, ऐसी 5 चीजें मैं आपको जरूर बताती हूँ. सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन इज द की. ऑब्जर्व करें अपने इमोशंस को, उन पे काम करें, अंडरस्टैंड करें कि मे बी यू आर फीलिंग एंग्री विद समबडी, मे बी यू आर होल्डिंग ऑन टू इमोशंस जो कि आपके मूड्स को डिफाइन कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग अ बिहेवियर. तो आप उनको जरूर ऑब्जर्व करें अपने आप को और उनसे कैसे डील करना है वो सीखें. दैट इज नंबर 1, विच इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट. देन सेकेंड कम्स एक्सरसाइज डेली. सो इमोशंस और फिजिकल एक्टिविटी का रिलेशन है, कोरिलेशन है, एंड दैट हैज बीन established by a lot of research and experts. So हर रोज maybe 20 to 30 minutes, even if you are busy, कुछ भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. इफ नॉट एनीथिंग, आप ऑन द स्पॉट अपने घर में चल सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं. तो कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप हर रोज करें. क्लीन और अच्छा खाएं, दैट ऑल्सो डिफाइन योर इमोशंस बिकॉज हार्मोन्स का भी इमोशन से लेना देना है. And it's a vast subject. I'm just trying to capture it in as less time as I can. And then third thing that you must do is जो भी negativity आपकी life में है, stay away from that. So maybe maybe you're a positive person, maybe you want balance in your life, but आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको negative करते हैं. maybe they have their own ways, comment करता है कोई, या कुछ ऐसे लोग हैं जो gossip करते हैं. तो आप उनसे जितना डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना अपने आप को पॉजिटिव आप रख पाएंगे. उनकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट ना करे, इसका ध्यान रखें. देन फोर्थ इज अपना एक सर्कल ऑफ एक्सेलेंस बनाएं. ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको अच्छा फील कराते हैं अबाउट योरसेल्फ, जिनके लाइफ में मे बी बेटर पर्पसेस है, मे बी बेटर गोल्स हैं लाइफ में, जो आपको लगता है कि इनसे मैं लर्न भी कर सकती हूँ, इनसे मैं सीख भी सकती हूँ. ऐसा एक सर्कल बनाएं एंड मेक श्योर कि आप उनसे मिले या उनसे रेगुलर बात करें. बाहर जाना बहुत जरूरी है, सो आपको जिस भी फॉर्म में आप उनसे बात कर सके. एंड देन यस, फिफ्थ इज अपना स्टेट को डिफाइन और कंट्रोल करना सीखें. एंड दैट्स वेरी पावरफुल. आपकी इमोशनल स्टेट आपकी फिजिकल स्टेट को भी इम्पैक्ट करती है एंड वाइस वर्सा. आप अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करके इमोशनल स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ यू कैन रियली प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस इन योर लाइफ एंड बिकम वेरी वेरी पावरफुल. एंड women वैसे ही आई थिंक दे आर ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी पावरफुल, yet I think we are more vulnerable because of our nurturing nature, because of some biological reasons as well. So we really need to take our power back. So that's all from my side. Thank you so much for listening to this, and I hope it helps. Over to you, Reena. Thank you, Sarita ji. So such a fruitful session, and I hope this will help many women to make their emotion more powerful and like more strengthen their emotions. Thank you very much. So, actually, now we have few questions from viewers. So, I would like to ask from you. So, first is that the women generally struggle with emotional balance because of like demanding lifestyle, as you said. So, what do you recommend for them? Yes, I think it's a very challenging time. One, there's pressure of family, and then there's pressure of career. Then there is social media also is another pressure in our life. Everybody is busy proving him or herself.
So सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ, आप कहाँ बेटर होना चाहते हैं अपनी लाइफ में. सो आई फील कि अभी ना एक ऐसा टाइम है जहाँ पे कि विमेन को भी लगता है यार दे वांट टू बी बेस्ट इन एवरीथिंग, करियर में भी बेस्ट प्रूव करना है, पर्सनल लाइफ में भी, हेल्थ भी, यू हैव टू बी फिट, देन नॉलेज. सो बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें कि हमको लगता है कि हमें 100 में से 100 मार्क्स चाहिए सबको. लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको रियलाइज होता है यार इट वाजंट सो मच फन, आप अपने पीस ऑफ माइंड खो देते हैं कुछ कुछ मोमेंट्स के लिए. एंड देन हम सुपर ह्यूमंस बनना चाहते हैं. एंड एक दिन ऐसा आता है जब हमको लगता है कि यार इतना मतलब मजा नहीं आ रहा है, या इट वाजंट सो मच फन बीइंग परफेक्ट इन एवरीथिंग. व्हाट इज द रियल फन? आई फील कि रियल फन जो है ना लाइफ में, वो है जो भी चीज आप चूज करो ना मोमेंट में, उसको एंजॉय करना, बीइंग इन दैट मोमेंट, एंजॉइंग दैट मोमेंट, बिकॉज लाइफ ऐसे भी पास हो ही जानी है. अगर मेरा एक करियर है तो क्या मैं काम करना एंजॉय कर रही हूँ? अगर हाँ तो देन यू आर ऑन राइट पाथ. सो if not, then ask yourself what need to be fixed, what need to be better. Health is also very important. It should not suffer for anything, but it does many a times. So what I really recommend is asking yourself 3 questions. सबसे पहला, what do you truly want? आप क्या चाहते हैं? Second, what resources do you need to get it? आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज what do you truly want, आप एक्चुअली क्या चाहते हैं. एंड देन सेकेंड इज उसको जो आप चाहते हैं उसके लिए क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए. एंड देन थर्ड इज who do you want to become in order to get it, who do you need to become rather, आपको क्या बनना है ताकि आपको वो मिले. So I recommend asking yourself these 3 questions. Thank you, Sarita ji. So I think this is the best answer for this question. So I have one more question for you. Like the question is that you have been advocating emotional intelligence, like mental health, and since time now. So tell us, how important is it to have a set of purpose for self? So I feel purpose is really important. I think हमारा जो purpose है that is something that really motivates us. So मेरे लिए पर्सनली पर्पस बहुत जरूरी है. एंड ये कुछ भी हो सकता है. इट्स नॉट लाइक कि आपका पर्पस होना चाहिए बहुत बड़ा या आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स. आई फील पर्पस छोटा भी हो सकता है. इट कुड as simple as being a good mother, best employee. आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है जो आपके अंदर से निकल कर है. ओके. एंड देन मुझे लगता है कि 3 कारण है कि हमारा पर्पस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला कारण है आई फील कि अगर आपका कोई पर्पस नहीं है, विदाउट अ पर्पस यू कैन नॉट हैव डायरेक्शन इन लाइफ. एंड एक दिन आपको फील होता है ओ आई वेस्टेड माई लाइफ. तो सबसे पहला रीजन आई फील व्हाई पर्पस इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज it gives you direction. Then second reason I feel purpose is very important, it is because ये आपका जो potential है, आपके अंदर जो इतनी limitless, human have unlimited potential, so उसको realize करने में आपका purpose आपकी help करता है, आपको challenge करता है. So purpose challenges you, you do better when you have a purpose. And then third is because I think ये आपको ना मतलब it is one key जो कि आप लोग आपको रिमेम्बर आपको याद रखेंगे आपके जाने के बाद. इट इज समथिंग दैट पीपल मेक पीपल रिमेम्बर यू. इट्स लाइक अ लेगेसी दैट यू लीव. योर पर्पस इज योर लेगेसी आई फील. सो इट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट टू डिफाइन योर पर्पस एंड नो योर पर्पस. Thank you, Sarita ji, for that great session. And if for my viewers, if you have any other questions, so you can write on our that Facebook page and YouTube page. Thank you, Sarita ji, for your time. Pleasure is mine. Thank you so much for inviting me, Reena ji. Thank you so much, Neha ji. Welcome.